Okay, if not, like let us proceed then. Okay, ये मैंने लिख के रखा है पहले से specific weight. Okay, just a sec. Okay, so here we will try to discuss the relationship between specific weight, okay, and its relationship with density. So what is the specific weight? Write it down. Okay, it is defined as what? Weight per unit volume. Okay, and weight is also written as mg divided by volume. Okay, so you can separate it like this. That is rho into g. M by V is what? M by V is density. That is density into gravity will give you a specific weight. After you have written the above formula, solve this question. A flood has a density of this much, acceleration due to gravity is this much, what will be the specific weight of the flood? Sir, what is the sign of specific weight? What is? The name of the sign. Name of the Specific. sign. Uh, So this one. I guess like we call it eta yes, sir. or something. Okay, this is gamma. Okay, different author use different sign, doesn't matter. Find out the answer for this. So 10.03. Repeat, 10 point 10.63. into 10 to the power 4, right? Yes, sir. What is, yeah, what is the that unit of the answer? Anybody from the class? Unit? Anybody from the class? Unit of the answer? फर्स्ट यूनिट बता दो फिर आगे बढ़ेंगे. kg. Okay, so let us see what its unit will be. So gram per centimeter square second square. Okay, let us see. So we are having specific gravity is equal to density into gravity. Density का unit हो गया kg per meter cube into gravity. Gravity is what? Gravity is an acceleration. Okay, so the unit of acceleration is what? Meter second minus 2. That is meter second minus 2. And you are having kg meter minus 3 into meter second minus 2. That is kg
meter minus 2, second minus 2. Okay, this is right. This is correct. Okay, after that, these are some unit conversions. Take a screenshot of this. I am taking out the things which are important. Millimeter is important, centi is important, meter, kilometer, inch, foot, and mile. Okay, like either you learn for length, or if you know the conversion for length, you can calculate it for area. So no need to remember this thing. Okay, but keep in mind, like if you're converting, while you're converting for area, you need to use that bracket thing. Okay, bracket में डाल के convert करना है. Okay, if that is done, note down the unit of this quantities. Force is important, mass, length, time, density, specific weight, pressure, dynamic viscosity, bulk modulus, all are important. Take a screenshot of this. Okay, and if you are asked to calculate dimensional formula, okay, so in that case, you will change M is for what? M is for mass, L is for what? L is for length, and T is for what? Time. Like you express the dimension of a quantity in terms of these three things, MLT. Okay, for example, the unit of density is what? Gram centimeter cube. Okay, per centimeter cube. So in terms of dimension, it will be written as gram के जगह पे लिखोगे M and centimeter की जगह पे L minus 3. This is the dimension of density. If this is done, okay, if you know the length, you can do for volume on your own. No need to write this. Okay, and this is easier one. Again, no need to write, but like if you want to, you can note it down. Okay, let us start something new. Okay, for example, we are calculating porosity for saturated sample. Okay, saturated means all the pore spaces are completely filled. Are completely filled with any fluid. Okay, it can be either oil or water or gas. Okay, if all of the pore spaces are filled, we will call the sample as saturated. For saturated sample, volume of the fluid will be equal to what? Volume of the fluid in the sample will be equal to the volume of pore spaces in the sample. This point is clear to everybody?
Yes, sir. Okay. मतलब सारे saturated means what? All the pore spaces are filled. Okay. So the volume will be equal to what? Volume of pore spaces. जितना खाली जगह है उतना ही को तुम भर सकते हो. Okay. For example, if this is your sample and this is the pore space. So अगर पूरे pore space में flood भर जाता है, let us suppose this is the flood. Okay, पूरे pore spaces में flood भर गया, then the volume of flood will be equal to what? Volume of flood अगर अगर तुम 1 सेंटीमीटर क्यूब फ्लड डाल पा रहे हो तो इसका वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस भी कितना होगा? दैट विल आल्सो बी इक्वल टू व्हाट? 1 सेंटीमीटर क्यूब. Okay, because volume depends upon what? Volume depends upon the dimension. It does not depends upon the material that it is being filled by. It only depends upon the dimension. Okay, length, breadth, height, or any other thing. Okay. So if the dimension is same, the volume will remain the same, irrespective of the material that is inside the space. Okay. Done. A question related to this. Or you can take it as one first case, type 1 question. Okay. It can ask you calculate the volume of pore space, or you can write it and its weight when saturated with water of bulk volume of the sample is find out the porosity. In this case, the sample is saturated with what? Water of density this much. What you need to apply? You need to apply that. I'm just writing the initial in saturated sample. Volume of pore spaces, that is the porous volume, is equal to what? Volume of flood. Okay, this is the first equation that you can make. Okay, and then what you know? You know that the dry weight is 10 gram and the saturated weight is 15 gram. So you know the weight of water. Weight of water that entered the sample.
is equal to what? How much gram? Anybody from the class? 15 gram. नहीं, 15 ग्राम इज योर सैचुरेटेड वेट. भींगने के बाद 15 ग्राम वेट हो गया. 5 gram. 5 ग्राम. 5 gram. गुड. ओके, दिस इज योर ड्राई वेट एंड दिस इज योर वेट. तो पानी कितना एंटर गया? पानी 5 ग्राम एंटर गया. ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैज एंटर्ड. अब आपको क्या पता है? आपको वॉल्यूम पता कर, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो यहाँ से, इस इक्वेशन से. तो फर्स्टली यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट? वॉल्यूम ऑफ फ्लड. वॉल्यूम ऑफ फ्लड आपको पता चल जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस निकाल पाओगे, because volume of flood will be equal to what? Volume of pore space. Now let us try to calculate the volume of flood. Okay, अब like use the equation density is equal to mass by volume. Density of water is what? 1.0 gram per centimeter cube. Mass of water is 5 gram. And volume of water, you don't know about this. Volume of water will be equal to what? 5 gram divided by 1.0 gram per centimeter cube. ओके, अब ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया और सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे डिवाइडेड बाई में था, दैट इज डिनोमिनेटर में था, तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर पे, दैट इज 5 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस will also be equal to what? 5 centimeter cube. Now you can calculate the porosity. Porosity क्या हो जाएगा? Volume of pore space divided by what? Bulk volume into 100%. What is the answer? 25%. 25%. और यहाँ पे like the thing that is to be noted here is the mass of water is equal to the what? Volume of pore space. तो इतना सारा तामझाम ना करके आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 5/25 कर सकते हैं. ओके, सॉरी 5/20 कर सकते हैं. 5 is your what? Volume of pore spaces divided by your bulk volume 20 centimeter cube. Okay, that is the mass of water will be equal to volume of pore spaces. ये लिख लो, mass of water will be mass of water in gram will be equal to what? Volume of water. Okay, in centimeter cube will be equal to what? Volume of pore spaces in centimeter cube. Okay, so this is true. जितना पानी का आपका वजन होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस होगा सेंटीमीटर क्यूब में, बस यूनिट चेंज कर लेना है. दिस इज वैलिड फॉर व्हाट? सैचुरेटेड सैंपल. आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देख के पता, क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि पानी कितना एंटर किया है, 10 है या 15 है, तो दैट अमाउंट ऑफ वाटर इज व्हाट? 5 ग्राम. 5 डिवाइडेड बाय व्हाट? योर टोटल वॉल्यूम. 5 डिवाइडेड बाय 20. सर ये लास्ट में तो ये सब तो वाटर के लिए होगा, मतलब एनी अदर हाँ, फ्लड के ये लिए तो नहीं. हाँ, एनी अदर फ्लड के लिए डिस्कस करेंगे नेक्स्ट केस. दिस इज वैलिड जस्ट फॉर वाटर. अगर वाटर रहेगा तो मास ऑफ वाटर को आप वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस के इक्विवेलेंट ले सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं.
इसका एक फॉर्मूला बताएंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला। सैचुरेटेड सैंपल के लिए यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, छोटा सा कैलकुलेशन है। फॉर अनसैचुरेटेड सैंपल द कैलकुलेशन बिकम्स लॉन्ग, सो उसके लिए वी हैव अ शॉर्ट फॉर्मूला फॉर दैट। If this is done, let us go to the next question. Change the density. Solve the question. आंसर बताओ सॉल्व करके। एक कॉन्सेप्ट है सैचुरेटेड सैंपल के लिए, वो हमेशा लगते रहेगा। दैट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस is equal to what? Volume of flood that has entered the sample. This will always be applicable. So then answer will be same as 5. Like we have changed the density, how the answer can be same? Think a bit. .77%. Okay, first answer is 27. Okay. 27.78%. Okay, somebody said कि आंसर सेम रहेगा। अब एक बार फिर से कैलकुलेट कीजिए। ओके, लेट अस कैलकुलेट। हमें ये चाहिए, वी नीड दिस क्वांटिटी, वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस कैसे निकाल सकते हैं? इस चीज को निकाल के, वॉल्यूम ऑफ फ्लड दैट हैज एंटर्ड द सैंपल। और वॉल्यूम ऑफ फ्लड कैसे निकाल पाएंगे? वॉल्यूम ऑफ फ्लड निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? मास ऑफ फ्लड दैट हैज एंटर्ड द सैंपल। ओके, ओके, तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है न्यूमेरिकल का। आपको पहले क्या चाहिए? आप पहले वो लिख लो, राइट दैट थिंग। उसके बाद वो कहाँ से आ सकता है, किस किस तरीके से आ सकता है, किस फॉर्मूले से आ सकता है, अब वो चीज़ लिखो एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। Like this is an easier one, but like for difficult question, like sometimes you will not be able to figure out ki how to proceed. So in that cases, firstly like write down the things that you need to calculate, that is the variables. Variables को आप पहले list out कर लो कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। Let us suppose like there are 3 variables, variable 1 2 3, ये 3 चीज चाहिए हमें। उसके बाद point out करो how we can get variable 1 from the given data set, how you can calculate variable 2, how you can calculate variable 3, and once you have calculated all the variables you can get the answer. So this is how you're gonna proceed. So like similarly like हमें वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस चाहिए पोरोसिटी निकालने के लिए। वॉल्यूम पोर स्पेस कहाँ से मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ फ्लड से। वॉल्यूम ऑफ फ्लड कहाँ से मिलेगा? मास ऑफ फ्लड से।
And like the mass of flood is what? The difference in mass is what? 5 grams. Mass of flood is what? Mass of flood is 5 grams. Again, density is equal to mass by volume. Density is 0.90. Mass is 5 gram. You can get the volume of flood from here. Volume of flood will be 5 divided by 0.90. Okay, centimeter cube. And once you have got the volume of flood, you can the volume of pore spaces will also be the same. Okay, this will also be the same, and then you can calculate the porosity. Okay, if this is done, let us proceed. Now we will see like what we do for unsaturated samples. Unsaturated sample means all the pore spaces are not filled. Okay, that is above the water table. Below the water table, all the pore spaces are completely filled with water. Above the water table, all the pore spaces are not completely filled. Some of the pore spaces may be filled, some of the pore spaces may be empty. Okay, so in this case, the concept of saturation comes into act. Saturation percentage. So this means that percentage of pore spaces filled up. कितना परसेंट पोर स्पेस भरा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस इज filled up divided by what? Total volume of pore spaces into what? Into 100%. Okay, अभी परसेंटेज वाला किसी किसी को लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो फॉर एग्जांपल लाइक you wrote an exam, you got 85 marks. 85 marks out of what? 100 marks. So how do you calculate your percentage? 85 divided by 100 into what? Into 100%. Okay. Whenever you are calculating percentage, you need to multiply by 100. Okay. That is the marks you have got divided by the total into 100. Similarly, if the total marks is what? 1300, 85 divided by 1300 into 100. Okay. The amount that you have got divided by total into 100. Okay, and sometimes it is also called as what? It is also expressed as degree of saturation. Okay, so this is nothing but saturation expressed in what? Fraction. Okay, you just need to remove this 100% thing. Total volume of pore space है, total volume of the sample नहीं है, तो you need to keep that thing in mind. यानी कि bulk volume को नीचे रख दिए. Okay. So like I have designed this formula for unsaturated sample. For if you want to calculate porosity for unsaturated sample, you can use this formula. Mass of H2O divided by what? बल्क वॉल्यूम डालेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में, यूनिट का बस यहाँ पे ध्यान रखना है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय व्हाट? परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन
okay, into 100%. सर मास है वेस्ट है नीचे वॉल्यूम ये पोर स्पेस का वॉल्यूम ये बल्क वॉल्यूम है। बल्क वॉल्यूम को लिखेंगे आप सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर अगर H2O के अलावा कोई दूसरा फ्लड है, okay, then what you can write, you need to, then you will be calculating the volume and then using this formula, volume of flood, okay, divided by what, bulk volume in centimeter cube, volume of flood also in centimeter cube, into 100 divided by what, percent of saturation into 100%. डन। अगर वाटर रहेगा तो वाटर के लिए ये भी लिख सकते हो। This formula is like applicable in all cases. Applicable in all cases, irrespective of the flood type. But this is applicable. This one is applicable only for what? Floods. Sorry, this one is applicable just for water. वहाँ पे तुम direct mass of water लिख सकते हो। Done. Okay, I will. बोलो, any doubts? नो सर Okay, same question. I am copy pasting it. Excuse me, sir. बोलिए। So how there, sir, two answer will be correct. One case there is a mass and another case there is volume. Their unit will be different. But how the answer will be said? Yeah, because like you just don't need to write the unit. If you're because the thing is, for water the mass and volume is what same. If the mass of water is 1 gram, then the volume of water will be also 1 centimeter cube. Okay, you need to ignore the unit. Okay, while putting in this equation. Okay, for water the mass is equal to what? Volume, but this doesn't. But this doesn't holds true for other floods. For other floods, the density is not 1, na? For water, the density is 1. That's why you can put either mass of water or volume of water, doesn't matter. But if you're dealing with any other flood, okay, except water, okay, then you need to write the volume of the flood. You cannot write the mass because the mass will not be equal to volume. Got it, sir. एक क्वेश्चन लिखिए। When it is 55% saturated with water is 15 grams.
bulk volume of the sample is this much. Okay, so you try solving it by two ways. But firstly, by using the formula that we wrote above, another by using simple calculations by not using any direct formula. 55 नहीं रखते हैं, शायद कुछ नेगेटिव वगैरह आ जाए, सो थोड़ा बढ़ा देते हैं, मेक इट 90%. Okay, do this question by yourself. Let us proceed. Anybody did this? 27.78%. Okay, ये सही लग रहा है, सही है. Okay, if you use the formula, it will save your time. Simple question from GATE. इसका calculation क्या रह जाएगा? Volume of water, that is, or mass of water, that is 5 grams divided by वो bulk volume, that is 20 centimeter cube into what? Let us see, into 100 divided by percentage of saturation. 100 divided by percentage of saturation, that is 90, and then again multiply it by 100. So this will be your answer. After that, this question. Effective porosity. For effective porosity, you need to take what? Volume of interconnected pore spaces divided by what? Total volume. When you are calculating porosity, denominator पे bulk volume रहेगा या फिर total volume रहेगा. When you are calculating saturation, okay, ऊपर तो same चीज रहेगा, volume of pore space. Volume of pore space is filled with flood divided by नीचे total volume of the pore space. इसको कीजिए, कितना आ रहा है? Volume of sample of sandstone is what? Bulk volume is 200 cc. Sir, answer will be 30%. 30%. देखते हैं. Anybody else? Solid volume इतना है. Volume of isolated unconnected pore spaces in the sample is 20. Unconnected pore spaces, it is 20. And the effective porosity.
तो चलिए हम लोग वही तरीके से चलते हैं। इफेक्टिव पोरोसिटी के लिए हमको चाहिए क्या, पहले वॉल्यूम ऑफ इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस चाहिए। ओके, बल्क वॉल्यूम तो है हमारे पास, दिस इज वी आर हैविंग। हमें वॉल्यूम ऑफ इंटरकनेक्टेड चाहिए, हमें वॉल्यूम ऑफ अनकनेक्टेड पता है। ओके, सो क्या लिख सकते हैं हम लोग, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस इज इक्वल टू व्हाट, अनकनेक्टेड पोर स्पेसेस प्लस कनेक्टेड पोर स्पेसेस। इसके बाद तो हम लोग यही स्टेप पे आएंगे। ओके, कि हमें कनेक्टेड कैसे मिलेगा, कनेक्टेड इस इक्वेशन से मिलेगा। ओके, अब इस इक्वेशन पे हमें ये चीज मालूम है, ये हमें निकालना है, और ये पता नहीं टोटल वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस, वी डोंट हैव टोटल वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस। तब हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस निकालने की जरूरत है। टोटल वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस कैसे निकालेंगे, यू आर हैविंग बल्क वॉल्यूम, यू आर हैविंग सॉलिड वॉल्यूम। ओके, सो एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास, क्या इक्वेशन होगा उसके बाद, 1 minus bulk volume by solid mass volume. ओके, बल्क वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, सॉलिड वॉल्यूम प्लस पोरस वॉल्यूम, यही होता है। इसके बाद यही इक्वेशन आएगा। तो बल्क वॉल्यूम हमारा 200 सीसी है, सॉलिड वॉल्यूम है हमारा 140 सीसी। ओके, पोरस वॉल्यूम हमें निकालना था, तो वी गॉट योर पोरस वॉल्यूम एज व्हाट, 60 सीसी। सिंस यू हैव गॉट 60 सीसी, नाउ यू कैन पुट दिस इन equation in here, 60 cc, 60 cc is equal to what, porosity unconnected plus porosity connected, and you know this thing, you know the unconnected one, unconnected is how much, 20, तो connected कितना हो जाएगा, 60 cc is equal to what, 20 cc plus porosity connected, so you can get pore spaces connected is equal to what, 40 cc. Since you have got connected pore spaces volume, you can put it in this equation. Okay, that is what, connected pore spaces divided by what, your bulk volume, that is 200 cc. So this is your answer. थर्टी किसने बोला था, 30 तो नहीं आ रहा है इससे। सॉरी सर 20 सर। 20 आएगा। आप लोगों को ऐसे मेथोडोलॉजी बना लेना है, लाइक दिस आर इजियर क्वेश्चंस, यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, आप सोच पाओगे एक बार में। बट जो लेंदी क्वेश्चंस होंगे उनमें ऐसे मेथोडोलॉजी बनाना है, आपको क्या चाहिए उसका इक्वेशन लिखो, फिर उस इक्वेशन में क्या मिसिंग है उसका इक्वेशन लिखो, ऐसे करके प्रोसीड करना है, तो दिस विल मेक योर क्वेश्चन इजियर। सर और एक बार समझा दें कि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सर देखिए फर्स्टली but sir, बोलो बोलो। bulk volume parts, how solid volume plus porous volume and total volume. ओके, बल्क वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, अगर ये सॉलिड है और सॉलिड के अंदर कुछ क्या है, पोर स्पेसेस है, मतलब कुछ छेद है, ठीक है। ओके, हॉलो स्पेसेस। ओके, सो तो ये टोटल का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम अगर खाली रहे या भरा हुआ रहे, डजेंट मैटर्स, व्हाट मैटर इज इट्स डायमेंशन। ये ऐसे खाली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका वॉल्यूम काउंट नहीं हो रहा है टोटल वॉल्यूम में। ओके, टोटल वॉल्यूम में तुम सबका वॉल्यूम काउंट करोगे, इस पार्ट का भी वॉल्यूम काउंट करोगे, इस हॉलो स्पेस का भी वॉल्यूम काउंट करोगे। वॉल्यूम जस्ट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन, इट डजंट डिपेंड्स अपॉन एनीथिंग, it doesn't depends upon any material that is filling up the space. Okay, so total volume is equal to what, your solid volume, that is ये वाला part, okay, जहाँ पे मट्टी है, okay, soil particles हैं, and this volumes which are empty, okay, solid volume plus porous volume, got it. Yes sir.
Next question. A 10 centimeter cube sandstone block. Okay. पूरे पूरे सैंपल का ही वॉल्यूम दिया हुआ है, दैट इज योर टोटल वॉल्यूम और bulk volume is equal to what? 10 centimeter cube, and it has a mass of what? 20 grams. Mass 20 grams है. Average density of sand grains is what? 2.5. Okay, यहाँ grain की density दी हुई है, that is particle density. Particle density है 2.5 gram per centimeter cube. So you need to calculate what? Porosity. Okay, जब particle density दे दिया जाए तो हमें क्या लगेगा? हमें यही लगेगा कि पोरोसिटी हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? पार्टिकल डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय पार्टिकल डेंसिटी इनटू 100%. अब इस फॉर्मूले पे हम आ गए. अब इस फॉर्मूले पे क्या हमारे पास है ये हमें तो निकालना है. ओके, वी नो दिस थिंग, पार्टिकल डेंसिटी हमें दिया गया है. ओके, दिस इज नोन, तो वी नीड टू कैलकुलेट बल्क डेंसिटी. आपको ऐसे प्रोसीड करना है. ठीक है, अब पता चल गया आपको कि बल्क डेंसिटी निकालना है. तो आप क्या करेंगे? आप फिर से क्वेश्चन को देखेंगे कि आप बल्क डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं. विच क्वांटिटीज यू कैन यूज टू कैलकुलेट bulk density. Okay, so bulk density is what? Dry mass divided by what? Volume. Okay, you have mass, you have volume. Divide कर दीजिए, आपको मिल गया bulk density, that is 2 gram per cc. Now you have bulk density, you have particle density, you can calculate your porosity. 20%. Okay, 2.5 minus 2 divided by 2.5. That is 0.5 divided 2.5, that is 20% is okay. If anybody is having any doubt, you can ask in between also. Sir, can you repeat once again that saturated part? It's not clear. Okay, saturated part. Case one, Sat case ये इस क्वेश्चन में no, sir, no. That starting one, that case one saturated part. ओके. हाँ, सैचुरेटेड में ये होता है कि लाइक ऑल द पोर स्पेसेस आर फिल्ड, सारे पोर स्पेसेस में फ्लड भरा हुआ है. ओके, तो फ्लड कितना भरेगा? जितना पोर स्पेस का वॉल्यूम होगा उतना ही फ्लड का वॉल्यूम होगा. ओके, कोई भी फ्लड रहे, तुम गैस भर दो या फिर पानी भर दो या फिर तेल भर दो, irrespective of the flood type, the volume of the flood will be equal to what? Volume of the pore space. That is what it is written here. Okay. For saturated sample, volume of flood is equal to what? Volume of pore spaces. Okay, आप ऐसे समझो, like this is your block. Okay, this is your sample, and this is your porous part. This is your solid, and this is your hollow. Okay, and इसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर. ओके, और हाइट है 1 सेंटीमीटर, और विड्थ भी है जो कि हमें दिख नहीं रहा है अभी. लेट अस सपोज इट इज आल्सो 1 सेंटीमीटर. लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, 2 into 1 into 1. अब लेट मी आस्क यू वन थिंग. इफ एनी फ्लड enter in this particular space, what will be its volume? उसका वॉल्यूम कितना होगा बताओ? Same as the that part volume. या सेम एज द हॉलो वॉल्यूम, दैट इज 2 into 1 into 1. कुछ भी एंटर कर जाए इसमें, वॉल्यूम उसका कितना रहेगा? इसके डायमेंशन से जो कैलकुलेट होगा वॉल्यूम,
उसके बराबर रहेगा। एंड दैट इज द रीजन वॉल्यूम ऑफ फ्लड इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस इज इन सैचुरेटेड सैंपल, क्योंकि पूरा का पूरा पोर स्पेस भरा हुआ है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? Okay. Okay, from next class, like we will increase the duration because like I guess it is taking a lot of time. Next question. Okay, मास दिया हुआ है सैंपल का आपको 2.1 kg, volume is 1 into 10 to the power minus 3 meter cube when fully dried. Okay, these are dry. Okay, a volume doesn't change on drying or wetting. Okay, it remains same. Volume dry is equal to what, volume wet. Okay, always. तुम सॉइल को भिंगा दो या फिर सॉइल को सुखा दो, डजेंट मैटर। ओके, जैसे ये तुम्हारा सैंपल है, ओके, एंड ये पोर स्पेस है। तुम भिंगा दोगे तो मैक्स टू मैक्स क्या होगा, भिंगा दोगे तो मैक्स टू मैक्स क्या होगा, इसके अंदर पानी भर जाएगा पोर स्पेस के अंदर। ओके, फिर भी इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, अगर हम देख लें इसका डायमेंशन ऐसे है, ओके, दैट इज 2 इंटू 1 ओके, then also its volume is gonna remain 2 into 1 okay। अगर तुम इसको सुखा देते हो then what will happen, the water will evaporate। okay, there will be no water in the sample, but still the volume of the sample will remain the same, that is 2 into 1। So it doesn't depends upon whether the sample is wet or dry। okay, that's why you will always take volume dry is equal to what, volume wet। ओके, ऑन ड्राइंग इट बिकम्स व्हाट 2 kg। ओके, सो ऊपर वाला क्या था हमारा, भींगा हुआ मास था, मास वेट इज दिस मच, मास ड्राई इज व्हाट 2 kg। ओके, तो मास ऑफ वाटर पता चल गया यहाँ से 0.1 kg विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम। ओके, दिस इज ऑलवेज वैलिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल इज दिस मच, पार्टिकल डेंसिटी पता चल गया 2.5, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर सबको पता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताना है आपको। ओके, तो सेम तरीका करेंगे। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोला है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस फिल्ड अप बाय वाटर डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस इनटू 100%। ऐसे डायरेक्ट देखोगे आप क्वेश्चन को तो हार्ड लग सकता है किन्हीं किन्हीं को क्वेश्चन, तो आप ऐसे तोड़ तोड़ के देखोगे। पहले डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोला है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा। ओके, अब क्या कैलकुलेट करना है, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस फिल्ड एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस। तो ये सब डेटा यूज करके करना है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस किससे निकल सकता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस हमारा निकल सकता है पोरोसिटी से। ओके, पोरोसिटी इज व्हाट, पोरोसिटी इज पोरस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वंस वंस यू कैलकुलेट पोरोसिटी यू विल गेट टोटल वॉल्यूम। तो उसके बाद पोरोसिटी का फॉर्मूला लिखिए, पोरोसिटी के फॉर्मूला से इसको निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस इज फिल्ड बाय वाटर। तो ये कैसे निकलेगा, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर हमें पता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस। इसको बनाइए आप लोग खुद से। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। बताइए कितना आ रहा है।
What is the answer? Anybody solved it? Okay, after each five classes, we will have a test. So be prepared for that. Okay, guys, this much for today. If you guys are having any question, do let me know. Okay, इसको सॉल्व करके रखिए. अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में we will discuss this. Anybody is having any question? No, sir. Okay then. Bye bye. Yeah. Thank you. Thank you, sir.